Bismillahirrahmanirrahim. This is the first class after midterm examination. So let us briefly review the contents, the parameters that were discussed before midterm examination. So let me start the presentation. As far as the definition of manufacturing is concerned, so it can be on the technological side as well on the economical side. So as far as the technological definition is concerned, so it is simply the application of any physical or chemical process that is used to change the geometry or the shape of the raw material, or maybe if you change the properties, both chemical or physical, and or appearance of a given starting material to make the final product. So basically, the technology that will be used to transform the raw material from one form to another form uh, is with reference to the technical side of the manufacturing system. And normally जब आप ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो इट may also cover the joining processes, like for example electric arc welding or oxyacetylene gas welding. So any welding process that is used to make any product will be manufacturing activity. So manufacturing also includes the joining of multiple parts to make the assembled products. Normally, they are accomplished by combination of equipments, which is machinery and their associated tooling. And of course, you will need the technical manpower to handle the activities to control the equipments. और ये भी आपने देखा होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस होते हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, नॉर्मली दे विल बी carrying out in some specific sequence. So you will see a set sequence of operations and processes during a manufacturing activity. So this is a block diagram, a schematic block diagram that shows the technological side of the manufacturing system. So you have a starting material, and that starting material undergoes different manufacturing processes within a manufacturing system. So एक manufacturing system होता है, normally you start with the raw material, and that raw material is processed through different processes, and finally you get some finished product. In addition to that, in some industries you will also get the scrap as a waste, which can be either reused or simply shipped out of the system. So you have starting material, and the output is the completed part or a sub-assembly. They are called as the resources of production. So if you remember, we discussed four M's and I's: M, 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 and I. Man, power, material, machinery, etc. So they are the input resources to any manufacturing systems. And within the manufacturing systems, then you see those manufacturing activities, those manufacturing processes or operations. This is another schematic of that technological side. So you have inputs and outputs, and then in between you have a manufacturing system where you see the conversion processes. So inputs are the raw material machines, as I said. कन्वर्जन प्रोसेसेस में जो है वो मैकेनिकल भी हो सकती हैं, दे कैन बी केमिकल ऑपरेशंस, they can be manual or they can be automated. And finally, you get the output in the form of a finished product. So inputs are basically the capitals, the labor, the raw material, the equipments. As far as the processes are concerned, so it can be assembly process, it
can be a maintenance operation, packaging, it can be transportation. So any activity within a manufacturing system is the technological aspect of the manufacturing. और आउटपुट में आपको प्रोडक्ट मिल जाता है और जो नॉर्मली जो कस्टमर फीडबैक है दैट इंफॉर्मेशन जिसको हम फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं इफ़ यू रिमेंबर सो दैट कैन बी सीन within the manufacturing activities. ठीक है ना so if you want to change the design with reference to some customer input, so that will reflect within the process plan, and basically that process plan is executed within a manufacturing system. So जो activities हैं जो processes हैं उसी में आपको वो transformation मिलेगी. So the customer inputs are basically reflected directly in the manufacturing activities. As far as the economic definition is concerned, so industrialists are normally concerned with the economy. So transformation of materials into items of greater value by means of one or more processing or assembly operations. You know? So basically, when you process a material, so you are adding value to that. आपने सुना होगा कि नॉर्मली जो प्रोडक्ट्स है उसको हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कहते हैं. So any activity that will be carried out in a manufacturing system will be adding value or capital to the product. So like for example, converting an iron ore into steel, it adds value. आयरन और जो है इट विल बी चीपर और स्टील को अगर आप कंपेयर करते हैं उसके साथ सो इट इज़ फार मोर एक्सपेंसिव देन एन ऑर्डनरी आयरन और. सो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग जो है इट एड्स वैल्यू टू द मटेरियल. Another example is the glass. Transforming sand into glass, it adds value. Refining petroleum into plastic, it adds value. So any activity that aids capital to the raw material or to the material that will be processed is basically manufacturing activity. So within that system, which is a manufacturing system, you will see manufacturing processes, and those manufacturing processes are basically the value added processes. For example, if you simply transport a raw material from one place to another place, from one workstation to another workstation, so it will add value to that because you will need some electric source, some power source for the transformation of the raw materials. वो पावर सोर्स जो है वो चाहिए होगा आपका. फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ कन्वेयर सिस्टम, यू हैव टू रन दैट कन्वेयर सिस्टम, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाती है. सो एनी बेसिकली एनी एक्टिविटी, any manufacturing activity within a manufacturing system adds value to the finished product. So you have a starting material, and then you process that material, and those processing operations basically adds value to it. Then we discussed different types of industries. ये हमने पढ़ी थी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. सो तीन टाइप्स हैं जो कि नॉर्मली हम डिस्कस की थी. Primary industries, secondary industries, and tertiary industries. So primary industries are those types of industries which normally uses the natural resources in its natural form. So it basically cultivate and exploit the natural resources. इसमें agricultural और mining industries सब आ जाती है. फिर हमने secondary industries discuss की थी. So basically secondary industries are those types of industries which convert the output of the primary industries into finished products. So normally जो basic industries होती हैं आपकी primary industries, they are the vendors which provide raw material to the secondary industries.
तो इसमें ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, पावर जनरेशन, कंस्ट्रक्शन, जितनी भी आपको मार्केट में मिलती है, दे आर सेकेंडरी टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज. एंड देन टर्शरी इंडस्ट्रीज हमने डिस्कस किया था. सो इफ़ वी include the service part with the secondary industries, so that becomes a tertiary industry. So those types of industries which makes the products, and in addition to that, if they also provide services to the customers, so that type of industry is known as a tertiary type of industries. और ये मैंने आपको बताया था कि you have to differentiate between tertiary industries and service sector industries technically. So यानी बैंकिंग की जो है, या एजुकेशन को आप ले लिए, या जो लीगल सर्विसेज की फर्म्स होती हैं उनको आप देखिए, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को अगर आप देखें, तो दे आर सर्विस प्रोवाइडर्स. ठीक है ना. सो एक सर्विस इंडस्ट्री होती है प्योरली सर्विस सेक्टर में, और एक टर्शरी इंडस्ट्रीज होती है. ठीक है ना. सो सर्विस इंडस्ट्रीज ओनली प्रोवाइड सर्विसेज टू द कस्टमर्स. टर्शरी इंडस्ट्रीज आर बेसिकली secondary industries. They make the product, and then in addition to that, they also give services with reference to those products to the customers. जो आफ्टर सेल सर्विसेज होती है. तो जो ग्रूअर की बुक है उसकी फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में यू विल सी अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज. 2-3 पेजेस की एक लिस्ट है. इट इज़ ओनली फॉर योर रेफरेंस. तो ISIC कोड जो है वो दिया जाता है बेसिकली इंडस्ट्रीज़ को. इट इज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड इसे कहते हैं. तो ये कैटेगराइजेशन जो है ये इन कोड्स की मदद से जो है फिर हम जानते हैं कि विच कोड इज़ गिवन टू द इंडस्ट्री. So that code basically decides the type of the industries, either it is tertiary or service sector, or secondary type of industry, yeah, primary type of industry. You know, so this is only just go through that list. फिर इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन में अगर आपको याद हो तो हमने प्रोसेसिंग और डिस्क्रीट पार्ट मैन्युफैक्चरिंग का भी डिस्कस किया था. सो बेसिकली इंडस्ट्रीज़ को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो दे कैन बी क्लासिफाइड ब्रॉडली इन 2 main categories: प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ एंड डिस्क्रीट प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज़, या डिस्क्रीट पार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ भी उसे कहते हैं. So processing industries are those industries which uses some chemical processes to transform the raw material from one form to another form. So इसमें ये सारे जो chemical industries है, petroleum industries है, foods and beverages, power generation, ये आ जाती है. And within the processing industries, we can have continuous type of production or batch production. Discrete part industries में ये होता है कि individual products आपके बनते हैं. So technically if you differentiate between processing industries and discrete industries, is that the flow of raw material is continuous in case of processing industries. There is no discontinuities of the raw material during the manufacturing processes. Discrete part manufacturing में individual parts will be manufactured, and there are disruptions, there are discontinuities in between the workstations. A part will be loaded to an individual workstation, it will be processed, and then the process will stop. It will be unloaded from that particular workstations and will be transported to some other machine, और वहाँ पे फिर लोड होके दोबारा से प्रोसेसिंग एक्टिविटी जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है. So there are discontinuities in the flow of the raw material as far as the discrete part manufacturing or discrete part industries are concerned. So ये नॉर्मल जो प्रोडक्ट्स आपके बनते हैं, दे आर
discrete type of industries, cars, aircrafts, appliances, etc. Uh, then discrete part manufacturing may be you can have continuous type of production or batch production. So they are some other technicalities within the system. ठीक है ना? तो अगर बैच प्रोडक्शन है तो बैच प्रोडक्शन जो है इट कैन बी within the processing industry, it can be within the discrete part manufacturing. Similarly for continuous production, it is a schematic view showing the difference between those two categories of industries. So A, B और C, D को अगर आप देखें तो A is continuous production for processing industry. So the flow of raw material will be continued within the processes. B is continuous production of discrete part manufacturing. So you will have individual products that will be processed and will go further. Batch production को अगर आप देखें तो it can be within the processing industries. So you will have different batches of products, but each specific batch, when you are working in a continuous type of industry, so the flow of that particular raw material within a specific batch again will be a continuous flow. Okay? And similarly, batch production for discrete part manufacturing, you will have separate batches, and within each batch you will have uh, individual products that will be processed. टाइप्स को जब आप देखते हैं सो बेसिकली द पैरामीटर दैट विल डिटरमिन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री वो आपने देखना होता है. सो द की फैक्टर दैट बेसिकली डिटरमिन द टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट दैट विल बी मेड. सो जो प्रोडक्ट का टाइप होता है वही डिसाइड करती है कि कौन सी इंडस्ट्री है. सो अगर लिक्विड स्टेट में है तो डेफिनेटली, या अगर गैशियस फॉर्म में आपका रॉ मटेरियल है तो 90% चांसेस आपके यही है कि इट विल बी carried out in some processing type of industry. So two basic categories of manufacturing are continuous industries and discrete part manufacturing. ये आपने जहन में रखना होगा. And as I said, continuous basically involves the continuous production of the product, and oftenly they use chemical processes to transform that raw material. And sometimes physical or mechanical processes can also be used, like for production of fertilizers और जो sugar industries अगर आप देखते हैं तो initially आपका जो raw material होता है that is in the liquid form, and finally the final product that you get from that industry is some solid. So ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यूस इंडस्ट्रीज़ हो तो उसमें केमिकल ऑपरेशंस आपको मिलते हैं. यू मे सी सम फिजिकल प्रोसेसेस. इन दोनों को जब आप कंपेयर करते हैं कंटिन्यूस इंडस्ट्रीज़ और डिस्क्रीट पार्ट मैन्युफैक्चरिंग को, सो जो कैटेगराइजेशन हम करते हैं जॉब शॉप की या बैच प्रोडक्शन की या मास प्रोडक्शन की, सो दैट इज़ बेसिकली विद रेफरेंस टू द डिस्क्रीट टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेयर इंडिविजुअल components or individual products are manufactured. So discrete involves the production of individual items, and it is then further divided into mass type or batch or job shop production. और जो जनरल कैटेगराइजेशन है तीनों की ये हम डिस्कस कर चुके थे. जॉब शॉप को हम लो प्रोडक्शन कहते हैं, बैच को हम मीडियम प्रोडक्शन कहते हैं, मास को हम हाई प्रोडक्शन कहते हैं. जॉब शॉप is that particular setup in which the quantities will be in the range of 1 to 100 units per year. और ये भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो 100
फिगर है वो बहुत कम नज़र आता है, लेकिन एक्चुअली जब आप सिनारियो को देखते हैं तो इट इज़ ह्यूज फिगर फॉर जॉब शॉप मैन्युफैक्चरर। बैच और मीडियम प्रोडक्शन में जो क्वांटिटीज़ बनेंगी, जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं, सो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, सो द क्वांटिटीज़ विल रेंज इन बिटवीन 100 and 10,000 यूनिट्स पर ईयर, लेकिन अब पर ईयर की बात हो रही है प्रोडक्शन की। और हाई प्रोडक्शन या मास प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, सो नॉर्मली द क्वांटिटीज रेंज इज अबव 10,000 यूनिट्स पर ईयर। सो ये क्वांटिटीज़ जो है ये फिर डिपेंड करती है वैरायटी के ऊपर, ठीक है। सो यू विल बेसिकली हैव टू लुक इनटू दोज टू पैरामीटर्स simultaneously, यानी प्रोडक्शन क्वांटिटी और प्रोडक्ट वैरायटी को। सो प्रोडक्शन क्वांटिटी जो है, एज द नेम इम्प्लाइज that it refers to the number of units of a given part or product that will be produced annually by a plant. And production quantities are basically classified in these three ranges जो हमने डिस्कस किया, मास, बैच और जॉब शॉप। फिर आपके पास प्रोडक्ट वैरायटी आ जाती है। सो प्रोडक्ट वैराइटीज आर बेसिकली the different types of products or the different designs that will be produced within that plant. So products with different shapes, products with different sizes or styles, that refers to the variation of the industry, or simply product variety कहा जाता है। So product variety की तरफ जब आप देखते हैं तो you then can have high product variety or low product variety. So again, the name implies when the number of product types, the number of designs made in a factory, if it is at the higher level, तो उसको हम high product variety कहेंगे. And if the number of product types made in that factory is at the lower level, so that will be low product variation. So uh, when you look into these two entities simultaneously, और उसको जब आप relate करते हैं, तो when you will tend to increase the product variation, अगर product variety आप बढ़ाएंगे तो you will be directly affecting the production rates of the system. So when you increase the product variety, so production quantity जो है वो it tends to be low. This is because of the setups. मैंने आपको बताया था कि जब आप बैच मास प्रोडक्शन में तो एक ही प्रोडक्ट आपका बनेगा, सो देयर आर नो सेटअप्स। ओनली एट द स्टार्ट ऑफ द इंडस्ट्री you will need to set up the equipment, tooling, the transportation scheme, and then once it's done, so you will continuously make the same product throughout the year. बैच प्रोडक्शन की जब आप बात करते हैं तो when you want to switch from one part type to some other part type, जो कि नॉर्मली बैच प्रोडक्शन में आपको मिलता है। सो बैच प्रोडक्शन इज़ when an industry makes 2 or 3 different types of products within the same setup. So if you want to switch from one batch, from one product type to some other product type, definitely the process plans will be different. If the process plans are different, this means that the sequence of operation, the sequence of processes will be different. The tools that will be used वो आपके different होंगे, जो ट्रांसपोर्टेशन स्कीम है वो आपकी डिफरेंट होगी। सो दैट इंडस्ट्री बेसिकली विल बी नीड टू रिकॉन्फ़िगर इटसेल्फ फॉर द न्यू प्रोडक्ट टाइप। तो आपने जो है वो जो प्रोडक्शन है स्टॉप करनी होगी, एंड देन फॉर द न्यू प्रोडक्ट यू विल रिकॉन्फ़िगर द होल सिस्टम। आपने ट्रांसपोर्टेशन स्कीम, जो लोडिंग अनलोडिंग स्टेशंस है वो आपने रीअरेंज करने होंगे, जो टूलिंग है वो आपने रीअरेंज करनी होगी, and then after the reconfiguration you will start manufacturing the new product. So this takes time, this reconfiguration. तो अगर आप बैच मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाते हैं तो you will have to stop the production and then reconfigure the system and again then restart the production for the new part type.
सो आपका जो प्रोडक्शन टाइम है वो आपका लॉस हो जाता है. सो इफ़ यू have losses in the times, so this means that you are basically directly hitting the production rate of that system, because production rates are directly dependent on the available time. So because the time will be a fixed quantity, ठीक है ना, उसको आप ज़्यादा नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव देयर इज़ एन इंडस्ट्री which is working in three shifts. So three shifts means for 24 hours. So in one day, you in one day night you have 24 hours, ठीक है ना, which cannot be increased. और उन 24 hours में अगर आप सेटअप्स की तरफ जाते हैं, so this means that you are basically decreasing that time. So you will be left with a minimum time, with less time, when you compare a batch type or job shop manufacturing industry with mass production. So that is why when you increase the variation in the products, you will be directly decreasing the production rates. Production rates means the production quantities. So there is an inverse relation between the two parameters. जो product variety और production quantity में जो relation है, that will always be an inverse relation. So when product variety is high, production quantity tends to be low, and this is because of the change over times. प्रोडक्ट वैरायटी की तरफ जब आप जाते हैं तो इट इज़ बेसिकली द डिफरेंसेस इन बिटवीन टू batches, or you can say in between two parts or two products. So the differences in the designs or shapes of the products may be at the smaller level, it may be at the larger side. For example, differences in air conditioner and automobile is much greater than in between an air conditioner and a heat pump. ठीक है ना, ये ग्रूअर की बुक की ही एग्जांपल है. उसमें अगर आप देखें प्रोडक्ट वेरिएशन की, तो ये एग्जांपल दी गई है. तो एयर कंडीशनर और ऑटोमोबाइल को अगर आप कंपेयर करते हैं, दे आर टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट्स. देयर इज़ नो मैच इन द प्रोसेसेस एंड इन द operations that will be involved in these two products. But if you compare an air conditioner with a heat pump, so maybe 80 to 90% of the sub parts will be the same. ठीक है ना, दोनों में pumps होंगे, दोनों में piping होगी, ठीक है ना. So this extent of the differences in the shapes or sizes basically refers to the term hard product variation and soft product variation. So एक तो लो प्रोडक्ट वैरायटी है और हाई प्रोडक्ट, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया. हाई प्रोडक्ट वैरायटी और लो प्रोडक्ट वैरायटी, they basically refers to the total number of products that will be total number of products means total number of designs that will be manufactured within industry. And then when you compare the differences of those designs, so they basically refers to the hard and soft product variation. So if the differences are at the lower level, so if there are more number of common parts within two parts or within two products, so it will be soft product variation, या उसको soft product variety कहते हैं. If that differences are at the higher level, तो उसको hard प्रोडक्ट वेरिएशन कहते हैं या हार्ड प्रोडक्ट वैरायटी कहा जाता है. सो हार्ड प्रोडक्ट वैरायटी को जब आप देखते हैं, तो इफ़ द प्रोडक्ट्स डिफर सब्सटेंशियली, हायर डिफरेंसेस मीन्स इफ द proportion of the common parts in between two components, in between two products are very low, इसको स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं. So if the level of standardization is low, so उसको hard product variation आप कहेंगे. Level of standardization means यानी जो standard components हैं, जो common components हैं, उनकी रेशो क्या है दो products में. So if the proportion of common parts are very low, or maybe एक दो ऐसे डिज़ाइन भी हो सकते हैं जिसमें कोई common parts ही ना हो,
So there may be no common parts, or if there are, so they will be at the very lower level. Again, this is an example of the Brewer book. A difference between a car and a truck. It is hard product variation. लेकिन अगर आप कार्स में फिर अगर आप देखें तो इन्हीं कार मॉडल्स को अगर आप देखें, इन्हीं करोला GLI को अगर आप कंपेयर करते हैं करोला XLI से, तो ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ द पार्ट्स आर कॉमन, ठीक है ना. सो द लेवल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इज़ वेरी हायर एट द मॉडल लेवल. सो वो सॉफ्ट प्रोडक्ट वेरिएशन होती है, ठीक है ना. सो लेकिन अगर एक कार को आप फॉर एग्जांपल हाइलेक्स के साथ कंपेयर करते हैं, तो जो लेवल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है या जो नंबर ऑफ कॉमन पार्ट्स हैं, दे विल बी वेरी लेस. सो अगेन theoretically speaking, there is no such hard and fast rule for the number of common parts, but most of the industries agree that if the number of common parts in between two different products are more than 75%, या बाज़ इंडस्ट्रीज जो है वो 80% लेती हैं. So if the number of common parts are more than 80%, so it will be soft product variation. और अगर 80 या 75% से कम कॉमन पार्ट्स हो किसी भी दो प्रोडक्ट में, तो वो हार्ड प्रोडक्ट वेराइटी होती है. हार्ड प्रोडक्ट वेराइटी में ये होगा कि आपने फिर सीक्वेंस जो है वो इन डेफिनेटली इफ़ द नंबर ऑफ कॉमन कंपोनेंट्स आर लोअर, so the sequence of processes will be significantly different, and vice versa. तो वो hard product variation होगी. As far as the soft product variation is concerned, so there will be small differences between the products, meaning that proportion of common parts will be very high. For example, differences between the car models. टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फिर आपने जज करना होता है. यानी अगर एक ऑटोमेशन स्ट्रेटजी आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, सो बेसिकली ये सारे पैरामीटर्स जो है ये फाइनली फिर आपने एक साथ में देखने होंगे टू come up with a final automated strategy for an industry. So you can have two types of modes of production within industry. या तो प्रोडक्शन टू ऑर्डर होगा या प्रोडक्शन टू स्टॉक होगा, एंड दोज प्रोडक्शन मोड्स आर बेसिकली द स्ट्रेटजीज ऑफ इंडस्ट्रीज. ठीक है, ये स्ट्रेटजीज होती हैं, ठीक है ना. सो सम ऑफ द इंडस्ट्रीज यूज़ दिस स्ट्रेटजी. बाज़ इंडस्ट्रीज जो है वो सेकेंड स्ट्रेटजी जो है वो अडॉप्ट करती है, PTO एंड PTS. PTO स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन टू ऑर्डर और PTS जो है वो प्रोडक्शन टू स्टॉक है. तो अब इनको अगर आप देखते हैं तो प्रोडक्शन टू ऑर्डर मीन्स, यानी जब कस्टमर की तरफ से ऑर्डर आएगा, व्हेन एवर एन कस्टमर विल प्लेस एन ऑर्डर, सो द कंपनी विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग थिंग्स, प्रोडक्शन उसकी स्टार्ट होगी. एंड प्रोडक्शन टू स्टॉक मीन्स कि द कंपनी विदाउट being waiting for the customer order, company जो है it will continuously make the products, they will stock those products, and then whenever an order will be received, so simply they will deliver the finished product to the customer or to the market. So there are basically two philosophies that are adopted by manufacturing systems. So production to order philosophy totally depends on the customer order. Whenever a customer will place an order, so the company will start production. So they have to wait for the customer orders. Production to stock की जो philosophy है उसमें irrespective of the customer order, the company is continuously making the product and they are stocking those products. So ये जनरल कमोडिटीज़ जितनी भी बनती हैं इंडस्ट्री में, सो दे रन ऑन दिस फिलॉसफी प्रोडक्शन टू स्टॉक. यानी बल्ब इंडस्ट्री को अगर आप देखें, टेलीविज़न को आप देखें, मोबाइल इंडस्ट्रीज़ आप देखें, मोबाइल फ़ोन्स की, कार इंडस्ट्रीज़ को आप देखें, उसमें जितने भी अप्लाइंसेस नॉर्मली बनती है,
they run through this philosophy. So production to order जो है production of item is based upon the customer order, and production to stock philosophy में the products are made in advance and then they are stored as inventory. And whenever an order is received, so they simply ship the product to the market. अब इन दो फिलॉसफीज में आपने जो पैरामीटर्स यूज़ होते हैं वो आपने देखने होते हैं. सो नॉर्मली प्रोडक्शन टू स्टॉक फिलॉसफी को अगर आप देखें तो जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस होंगी and the types of operations and the types and the volumes of resources in the raw materials, the tooling, etc., the equipment that will be used. Uh, these are the three key parameters that you will have to keep in mind while manufacturing some particular product. The production processes, then the types of operations within those processes, and the kinds of volumes, that how much number of products will be manufactured and what will be the resources of those productions. So all those key parameters are known in advance for production to stock. In प्रोडक्शन की स्टॉक फिलासफी के अंडर जो इंडस्ट्रीज काम करती है उनको पता होता है कि क्या प्रोडक्ट उन्होंने बनाना होगा, and they have the process plan in advance. So through that process plan they know each and every entity कि क्या क्या resources होंगे, कौन से operations आपने perform करने होंगे, कौन से processes आपने, वो sequence आपका क्या है basically. So this results in an easy production planning. So बहुत easy होता है आपको production plan बनाना. However, it is very difficult to make a production plan when you are working in production to order philosophy. So production to order जो है उसमें basically आपका जो exact product specification है, so they are only established when you receive an order from the customer. जब order place हो जाता है, so then you know कि क्या product आपने बनाना होता है, you make the process plan and then you make the production plan. So it needs time. So that is why within the market you will see above 90% industries that will work under the PTS philosophy. So ये दो philosophies जो है वो आपने ध्यान में रखनी होगी, प्रोडक्शन टू ऑर्डर है या प्रोडक्शन टू स्टॉक है. And based on that, then we decide for job shop production or batch production or job production. So that we will discuss in the next video. So